गुरुभ्यो नमः। शतश्लोकेन पण्डितः संक्षेपरामायणस्य व्याकरणंशानामध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतमस्ति। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। हमने जहां से परसों हम खत्म किए थे वहां से आगे जाते हैं। वालिनः च ब्रलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितः च आसीत् नित्यं वीर्येण राघवे। ये श्लोक हमने देखा और उसके बाद हमने देखा राघव प्रत्ययार्थम तो दुंदुभेः कायोत्तमं दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वत सन्निभम। यहाँ तक हमने देखा है और उसके आगे हम अभी जाते हैं। महाबाहुः महाबलः क्षम्यताम् श्लोकः अत्र अस्ति उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्यः चास्ति च अस्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। तर्हि अत्र उत्स्मयित्वा इति आर्षरूपं भवति। उत् योग स्मि इति धातु, तर्हि तत्र लेवन्तमव्ययं भवेत्, परन्तु अत्र त्वान्त लिखितं वर्तते, तर्हि तत् सम्यक् नास्ति इति स्मरतु। अन्वयं पश्यामः। चिक्षेप, किं चिक्षेप, कः चिक्षेप, तर्हि रामः चिक्षेप। कं चिक्षेप, तर्हि तत्र दुन्दुभेः यत् कायं वर्तते तं चिक्षेप। केन चिक्षेप, पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप। कति योजनं चिक्षेप, 10 योजनं चिक्षेप। किं कृत्वा इति चेत् उत्स्मयित्वा चिक्षेप, नाम किञ्चित् स्मितं कृत्वा सः रामः पादाङ्गुष्ठेन 10 योजनं चिक्षेप। तथा च किं कृत्वा अस्थि प्रेक्ष्य, दुन्दुभेः अस्थि तत्र वर्तते, अस्थि प्रेक्ष्य नाम दृष्ट्वा। कीदृशः रामः, महाबलः महाबाहुः रामः पादाङ्गुष्ठेन 10 योजनं। कीदृशं 10 योजनं, सम्पूर्णं 10 योजनम् इति तत्र अन्वयः अस्ति। तर्हि सम्पूर्णश्लोकस्य अन्वयं कथं भवति, महाबाहुः महाबलः रामः अस्थि प्रेक्ष्य उत्स्मयित्वा च पादाङ्गुष्ठेन सम्पूर्णं 10 योजनं चिक्षेप। तर्हि अर्थः किं भवति अत्र पश्यतु। महाबाहुः महाबलः मतलब अत्यंत बलशाली, ऐसे श्री राम ने दुंदुभी की जो अस्थि थी उस अस्थि को देखकर किंचित हंसकर पादांगुष्ठेन अपने पैर के केवल अंगूठे से 10 योजनम चिक्षेप, 10 योजन उसे दूर फेंक दिया। संपूर्ण 10 योजन उसने, राम जी ने उसे उस अस्थि को दूर फेंक दिया, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। तो अभी हम महाबाहु समस्त पद देखते हैं। महान्तौ बाहु यस्य सः, 2 बाहु है इसलिए बाहु का द्विवचन है, और इसीलिए महान्तौ उसका विशेषण है बाहु का, इसलिए द्विवचन हुआ महान्तौ बाहु यस्य सः, बहुव्रीहि समासः अस्ति। महाबलः महत् बलं यस्य सः, किमस्ति तत्र विग्रहः, महत् बलं यस्य सः। पादाङ्गुष्ठेन, अत्र अपि समासः अस्ति, पादस्य अंगुष्ठः पादाङ्गुष्ठः, तेन पादाङ्गुष्ठेन 10 योजनम्। अत्र सम्यक्
लिखितं नास्ति, कर्मधारय इति लिखितमस्ति, परन्तु तत्र दशानां योजनानां समाहारः इति द्विगुसमाहारसमास वर्तते। दशानां योजनानां समाहारः द्विगुसमाहारसमासः अत्र अस्ति। तर्हि तत् समीकरोतु। Wherever you have written, please correct. We will go to the next shloka. बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेषुणा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। तर्हि सप्त एकेन च एव इत्यत्र पदविच्छेदः अस्ति। अन्वयं कुर्मः। बिभेद इति क्रियापदम् अस्ति। कः बिभेद? रामः बिभेद। किं कुर्वन् बिभेद? जनयन् बिभेद। किं जनयन्? प्रत्ययं जनयन् बिभेद। केन? एकेन महेषुणा बिभेद। किं बिभेद? तर्हि सालान् बिभेद। कति सालान् बिभेद? सप्तसालान् बिभेद। सप्तसालान् कीदृशम् अस्ति? गिरिं तथा च पर्वतम्। कुत्र बिभेद इति चेत् तत्र रसातलं बिभेद। पुनः पुनः इति कुत्र लेखनीयं? पुनः बिभेद। अत्र क्रियाविशेषणम् अस्ति बिभेद इति। तस्य बिभेद इति धातोः क्रियाविशेषण इति क्रियापदस्य क्रियाविशेषणं पुनः इति वर्तते। तर्हि अन्वयं भवति तदा प्रत्ययं जनयन् एकेन महेषुणा सप्त सालान् गिरिं च रसातलं पुनः बिभेद इति वर्तते। अर्थं पश्यामः। प्रत्ययं जनयन्, तर्हि अपने बल के विषय में सुग्रीव को प्रत्यय देकर, मतलब उन्हें दिखाकर, उन्होंने और कैसे दिखाया और कैसे उनको प्रत्यय जागरूक किया, उनका प्रत्यय जागरूक किया। मतलब प्रत्यय मतलब विश्वास, ऐसा हम कह सकते हैं। विश्वास कैसे जागरूक किया? तर्हि तत्र अस्ति एकेन महेषुणा सप्तसालान्, मतलब एक ही महान धनु बाण से उन्होंने 7 साल वृक्ष और पर्वत को रसातल तक विदीर्ण कर दिया। क्या किया है? भेद कर रसातल डाल दिया, रसातल तक भेज दिया, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। महेषुणा अत्र समासः अस्ति। महाञ्च सः इषुः महेषुः तेन। उकारान्त पुल्लिङ्गि शब्दः महेषुः इति अस्ति, तस्य तृतीया महेषुणा इति भवति। प्रश्नः अस्ति अत्र, पश्यामि। Palm tree and sal tree, need to check. I think sal is different from palm. अस्तु। ततः प्रीतमनाः ते न विश्वस्तः सः महाकपिः किष्किन्धां रामसहितः जगाम च गुहां तदा। अभी क्या हो रहा है देखिए। ततः प्रीतमनाः, अन्वयं पश्यामः। रसातल में विदीर्ण करके डालने के बाद जगाम, कः जगाम? रामः, क्षम्यतां, सुग्रीवः जगाम, नाम महाकपिः जगामः। कुत्र जगाम? गुहां जगाम। कां गुहां जगाम? किष्किन्धां गुहां जगाम। महाकपिः कीदृशः आसीत्? रामसहितः महाकपिः, मतलब जो सुग्रीव थे वो राम के सहित ऐसे सुग्रीव थे। और कैसे थे महाकपि? प्रीतमनाः, राम जी ने उनको प्रत्यय दिया था
इस 7 सालों के वृक्ष को उन्होंने एक ही बाण में उसका भेद किया था और पर्वतों को सबको रसातल तक विदीर्ण किया हुआ था। यह देखकर बाली को केवल राम ही नष्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं, हनन कर सकते हैं, ऐसा मानकर प्रीतमनाहा मतलब आनंदित हुए ऐसे सुग्रीव ने प्रीतमनाहा तेन केन तेन नाम राम जी का वो जो पराक्रम था उससे प्रीतमनाहा मतलब आनंदित होकर विश्वस्त मतलब उनको विश्वास निर्माण हुआ। ऐसा होकर उस महाकवि सुग्रीव ने राम से सहित सुग्रीव कहाँ गए तरी राम सहित किष्किंधा नामक गुहा पहुंच गए। गुहा मतलब यहाँ पर कोई प्रदेश का नाम है न कि गुहा का नाम। हमने देखा था ततः सह महाकपिः तेन प्रीतमनाः विश्वस्तः च तदा रामसहितः किष्किन्धां गुहां जगाम। तर्हि अत्र अर्थः भवति तब राम के बल से प्रसन्न तथा विश्वस्त सुग्रीव राम के साथ जो विश्वस्त हुए थे ऐसे सुग्रीव राम के साथ अपनी राजधानी किष्किंधा यहाँ पर गए। किष्किंधा नामक गुहा में गए। गुहा मतलब यहाँ पर कोई जगह है न कि गुफा, बड़ी सी कोई खाई जैसी जगह है। ततः गर्जत हरिवरः क्षम्यतां ततः अगर्जत हरिवरः सुग्रीवः हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। अत्र समासः द्रष्टव्यं वर्तते पूर्वस्मिन् श्लोकस्य। तर्हि क्षम्यतां। सो लेट्स् सी इट् क्विक्ली। सो प्रीतमनाः इत्यत्र समासः अस्ति। प्रीतं मनः यस्य अरे प्रीतं मनः यस्य सः बहुव्रीहि समासः अस्ति। प्रीतं मनः यस्य सः महाकपिः महान च असौ कपिः कर्मधारय समास महान च असौ कपिः कर्मधारय समास राम सहितः रामेण सहितः तृतीया तत्पुरुष समासः वर्तते। अधुना अस्य श्लोकस्य पश्यामः कीदृश अन्वयः भवति। ततः अगर्जत हरिवरः सुग्रीवः हेम पिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। तर्हि अगर्जत इति तत्र क्रियापदम् अस्ति। कः अगर्जत तर्हि सुग्रीवः अगर्जत। कीदृशः सुग्रीवः हेमपिङ्गलः मतलब जैसे ही उनका चेहरा निर्वर्ण हुआ था, लेकिन जैसे ही उनका विश्वास आया कि राम जी बाली का हनन कर सकते हैं तो उनका वर्ण पूर्ववत सुवर्ण जैसा हो गया। इसलिए यहाँ पर हेम पिंगलः सुग्रीवः ऐसा कहा है। और कौन? हरिवरः। हरि मतलब यहाँ पर बंदर। उनमें श्रेष्ठ वरः मतलब श्रेष्ठ। हरीषु वरः हरिवरः ऐसा अर्थ है। या हरिणाम वरः हरिवरः दोनों भी पॉसिबल है, दोनों भी बराबर है। निर्जगाम इति द्वितीयं वाक्यं वर्तते। तत्र क्रियापदमस्ति निर्जगाम। कः निर्जगाम? वाली इति निर्जगाम। केन निर्जगाम? नादेन निर्जगाम। वालिः इत्यस्य कृते कः शब्दः अत्र श्लोके योजितः? हरीश्वरः नाम हरीणाम् ईश्वरः। ईश्वरः नाम भूपः। हरीश्वरः नाम वाली। तेन नादेन सुग्रीवः अगर्जत खलु, तर्हि तेन नादेन कीदृशेन नादेन? महता नादेन निर्जगाम मतलब बाहर निकल आए। तो यहाँ पर पहले हम समास देखते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। हरिवरः, हरीषुवरः या फिर हरिणाम वरः।
अगर हरिणाम वरः है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, हरीषु वरः है तो सप्तमी तत्पुरुष समास। यहाँ पर हरीषु वरः विग्रह में तो लिखा है, लेकिन यहाँ षष्ठी तत्पुरुष लिखा है, जो कि सप्तमी तत्पुरुष होना चाहिए, या फिर यहाँ षष्ठी तत्पुरुष लिखा है तो ऊपर हरिणाम वरः ऐसा चाहिए। दोनों भी विग्रह करेक्ट है। हेम पिंगलः, हेम इव पिंगलः, हेम पिंगलः मतलब सुवर्ण जैसे पिंगल, हेम इव पिंगलः, हेम पिंगलः। अत्र कर्मधारय समासः अस्ति, न तु बहुव्रीहि। हरीश्वरः, हरीणाम ईश्वरः, हरीश्वरः षष्ठी तत्पुरुष समासः, हरीणाम ईश्वरः षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्थ क्या है? तब राम ने बल से उत्साहित, वह राम के बल से उत्साहित हुए ऐसे सुग्रीव गर्जना करने लगा, ऐसा सुग्रीव गर्जना करने लगा। उसकी महान गर्जना को, महती गर्जना को सुनकर वाली गुफा से बाहर आ गया। निर्जगाम मतलब बाहर आ गया। अनुमान्य च तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्र एनं शरेण एकेन राघवः। तर्हि अत्र अन्वयः कथं भवति? I will just see the questions here and then we will proceed. Hemapingala is Karmadhare, but as it denotes Sugriva, should it be Bahuvrihi? Hemapingala Varnaha Yasya Saha. नहीं, विशेषण है, लेकिन हेम जैसा पिंगल ऐसा ही अर्थ है ना वहां पर। हेम जैसा पिंगल ऐसा जो सुग्रीव है वो, तो आई थिंक इट इज कर्मधारय, इट कांट बी बहुव्रीहि समास। समागतः इति क्रियापदम् अत्र वर्तते। कः समागतः? वाली समागतः। तदा, तदा वाली समागतः मीन्स अर्थ क्या है? वहां पर वाली युद्ध करने के लिए सामने आ गए। किमर्थम क्यों आए हैं? योद्धुम, ऐसा अध्यार यहाँ करना है, युद्ध करने के लिए। केन सह योद्धुम? सुग्रीवेण सह योद्धुम। और ताराम अनुमान्य, और कैसे आए हैं? अनुमान्य, काम अनुमान्य, ताराम अनुमान्य, सुग्रीवेण सह योद्धुम वाली समागतः इति वाक्यम्। तर्हि निजघान, कः निजघान? राघवः एनम्, एनम् निजघान, नाम राघवः एनम्, निजघान का अर्थ है हनन किया। केन? एकेन शरेण, केवल एक ही बाण से राघव ने, मतलब राम जी ने वाली का हनन किया। एनम यहाँ पर किसके लिए है? वालिनम इत्यस्य कृते वर्तते। यहाँ पर कोई भी समास नहीं है। आगे जाते हैं, कुछ सिंपल है श्लोक, ऐसे कुछ नहीं है उसमें। ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिनम् आहवे सुग्रीवम् एव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। प्रत्यपादयत् इति क्रियापदम् अस्ति, वापस दे दिया ऐसा अर्थ है यहाँ पर। कः प्रत्यपादयत्? राघवः प्रत्यपादयत्। कम किं कृत्वा? हत्वा। कं हत्वा? वालिनं हत्वा। कुत्र हत्वा? आहवे हत्वा। कस्मात् कारणात् हत्वा? सुग्रीववचनात् हत्वा। तर्हि राघवः सुग्रीववचनात् आहवे वालिनं हत्वा, उसके बाद उन्होंने क्या किया है? तद राज्य, उस राज्य पर सुग्रीवम एव प्रत्यपादयत्,
प्रत्यपादयत, सुग्रीव को ही वापस कर दिया, वह राज्य उस राज्य पर बिठा दिया, उनका प्रतिष्ठापन किया, ऐसा अर्थ है। सुग्रीव के आग्रह वचनों को सुनकर राम ने युद्ध में वाली को मारकर उसके छोटे भाई सुग्रीव को ही किष्किंधा के सिंहासन पर बिठा दिया। प्रत्यपादयत मतलब बिठा दिया। अभी हम आगे देखते हैं। 21 हाँ, समासः अस्ति वा? हाँ, सुग्रीव वचनात् इत्यत्र समासः अस्ति। सुग्रीवस्य वचनं तस्मात्, षष्ठी तत्पुरुष समासः। तद्राज्ये, तस्य राज्ये, तद्राज्ये, उसी उसके राज्य में, ऐसा अर्थ है। तस्मिन, तस्मिन क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि राज्य, यहाँ पर राज्य सप्तमी है, राज्य शब्द की सप्तमी है, और वो डिनोट करने के लिए यहाँ पर तस्मिन का आधार लेना पड़ता है। अस्तु। सहज सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षु दिदृक्षुः जनकात्मजाम। अभी जब वाली का हनन हो गया, तब सुग्रीव ने राम को मदद करने का जो प्रतिज्ञा की थी, उसके बारे में वो अभी आगे कुछ कर रहे हैं। तो क्या किया है, पहले अन्वय देखते हैं एंड वी विल सी द मीनिंग। प्रस्थापयामास मतलब भेज दिया। किम कृत्वा प्रस्थापयामास, समानीय, सबको इकट्ठा करने के बाद, सभी वानरों को इकट्ठा करने के बाद। कान समानीय, वानरान समानीय, कीदृशान वानरान, सर्वान वानरान समानीय। कः प्रस्थापयामास, वानरर्षभः, वानर ऋषभः इत्यत्र सन्धिः भवति, वानरर्षभः इति। तर्हि कीदृशः वानरर्षभः? दिदृक्षुः। कां दिदृक्षुः? जनकात्मजां दिदृक्षुः। सः वानरर्षभः सर्वान् वानरान् समानीय कुत्र प्रस्थापयामास? दिशः प्रस्थापयामास, विविध दिशाओं को, सभी वानरों को इकट्ठा करने के बाद जनकात्मजा, जनक राजा की पुत्री को देखने की, नाम ढूंढने के हेतु से उन्होंने विविध दिशाओं को भेज दिया, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। देखिए, अपने राज्याभिषेक के अनंतर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने जानकी कहाँ है इसका पता लगाने के लिए विभिन्न दिशाओं में स्थित बंदरों को बुलाकर चारों तरफ भेज दिया। यहाँ पर हम समास देखते हैं। वानरर्षभः, वानरेषु ऋषभः, वानरर्षभः। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है, न कि कर्मधारय समास। यहाँ पर के लिखा है, कर्मधारय समास नहीं है, सप्तमी तत्पुरुष समास। जनकात्मजाम, आत्मजा इत्यत्र समासः वर्तते। आत्मनः जायते इति, यही समास का विग्रह है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, इसलिए आत्मजा शब्द प्रवृत्त हुआ है। जनकस्य आत्मजा, जनकात्मजा, और यहाँ पर द्वितीय है, इसलिए ताम। जनकस्य आत्मजा यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। ततः गृध्रस्य वचनात् सम्पातेः हनुमान् बलि शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्। ततः उसके बाद, पुप्लुवे, कह पुप्लुवे,
हनुमान पुप्लुवे। कीदृश हनुमान? बली, बलवान इत्यस्य बली इति अर्थः। बली हनुमान पुप्लुवे। कुत्र पुप्लुवे? लवणार्णवं पुप्लुवे। कीदृशं लवणार्णवं? शतयोजनविस्तीर्णं लवणार्णवम्। कस्मात् कारणात्? वचनात्। कस्य वचनात्? सम्पातेः गृध्रस्य वचनात् हनुमान बली हनुमान शतयोजनविस्तीर्णं लवणार्णवं पुप्लुवे इति अर्थः। अत्र उपप्लवे, क्षम्यताम्। ततः बली हनुमान सम्पातेः गृध्रस्य वचनात् शतयोजनविस्तीर्णं लवणार्णवं पुप्लवे। इस प्रकार सुग्रीव के आदेश के बाद परम बलशाली हनुमान ने संपाति नामक गिद्ध के वचनानुसार शतयोजन विस्तीर्ण 400 कोस विस्तृत खारे सागर को पार कर दिया। अभी यहाँ पर समास देखते हैं हम। शतयोजन विस्तीर्णम, शतयोजनम इत्यत्र द्विगु समासः अस्ति, शतयोजनं विस्तीर्णम इत्यत्र कर्मधारय समासः अस्ति। पश्यतु, शतानां योजनानां समाहारः शतयोजनम्, अत्र द्विगु समासः। शतयोजनं विस्तीर्णं तम् इति चेत् अत्र कर्मधारय समासः भवति। हाँ, व्हाट इज द बेसिस टू डिसाइड वेदर कर्मधारय और बहुव्रीहि समास? सामान्यतः किमस्ति तत्र? अधुना एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। अग्रे आयास्यति तदा स्पष्टीकरोमि। And the second question was, उपप्लुवे इति एव अस्ति किल? उपप्लुवे अत्र न लिखितमस्ति। We will see what is written. प्लु इति धातुः अस्ति, तर्हि प्लु प्लुङ्गतौ इति उपप्लुवे इति। तर्हि सत्यमेव अत्र तत्र उपप्लवे इति लिखितं, तत्र उपप्लुवे एव भवेत्। अत्र श्लोके तु पुप्लुवे इति अस्ति, परन्तु तत्र अन्वये पुप्लवे इति लिखितं। तदेव I was thinking I'm somewhere making mistake by saying पुप्लवे। ओके, अस्तु। तर्हि अत्र शतयोजन विस्तीर्णं, that is complete. Okay, now see here, विस्तीर्णम् इति अत्र शब्दः अस्ति। विस्तीर्णं किं? लवणार्णवम्। विस्तीर्णं लवणार्णवम् इति अस्ति। तर्हि लवणार्णवम् इत्यस्य विशेषणमस्ति विस्तीर्णम् इति। तर्हि कीदृशं लवणार्णवं? विस्तीर्णं लवणार्णवम् इति वर्तते। तर्हि अत्र कर्मधारय समासः एव भवति, न तु तत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। Now we will go to the next, and whenever there is bahuvrihi, I will explain it once again. तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गताम्। यहाँ पर अन्वय देखते हैं। ददर्श, ददर्श मतलब देख लिया। किसने देखा है? हनुमान ददर्श। काम ददर्श, सीताम ददर्श।
किं कृत्वा समासाद्य, कुत्र समासाद्य, लंकां पुरीं समासाद्य, कीदृशीं पुरीं, रावणपालितां लंकां पुरीं समासाद्य, मतलब रावण पर जिसका शासन हो रहा था, ऐसी लंका नामक पुरी को पहुंचकर सीता को देखा। कीदृशीं सीतां, तर्हि गतां सीतां, कुत्र गतां, अशोकवनिकां गतां, मतलब जो अशोकवनिका में थी ऐसी सीता को देखा। तथा च कीदृशां सीतां, ध्यायन्तीं, कं ध्यायन्तीं, रामं ध्यायन्तीं सीतां ददर्श। कः ददर्श, हनुमान् ददर्श। अस्तु, तर्हि अत्र किं वर्तते पश्यामः। हनुमान रावण द्वारा पालित लंका में जाकर वहां पर अशोक वाटिका में राम का ध्यान करती हुई सीता को देखा। किसने देखा है, हनुमान ने देखा है। तो हनुमान ने क्या देखा है, सीता को देखा है। समास देखते हैं यहाँ पर, रावण पालिताम इति अस्ति तत्र, रावणेन पालिता, रावण पालिता तृतीया तत्पुरुष समास, ताम इति द्वितीया अस्ति इति कृत्वा तत्र ताम इति योजनीयम्। रावणेन पालिता ताम रावण पालितां तृतीया तत्पुरुष समासः अत्र वर्तते। अशोक वनिकाम, अशोकानां वनिका, अशोक वनिका, अशोक वृक्षों का वन, वन मतलब यहाँ पर उसी अर्थ में वनिका शब्द आया है, अशोक वनिका ताम इति द्वितीया अस्ति, अशोक वनिका ताम अशोक वनिकाम, अत्र अपि कर्मधारय समासः, क्षम्यतां षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति, अशोकानां वनिका अशोक वनिका। निवेदयित्वा अभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। तर्हि अत्र किम् अस्ति अन्वयः, झटिति पश्यामः। मर्दयामास इति क्रियापदम्। कः मर्दयामास, हनुमान् मर्दयामास। किं मर्दयामास, तोरणं मर्दयामास। किं कृत्वा, क्षमाश्वास्य समाश्वास्य, कां वैदेहीं समाश्वास्य तोरणं मर्दयामास। तथा च किं कृत्वा, निवेदयित्वा, किं निवेदयित्वा, अभिज्ञानं निवेदयित्वा, जो राम जी का अभिज्ञान था मतलब पहचान थी, ऐसी चीज दिखाकर, तथा च विनिवेद्य, किम विनिवेद्य, रामस्य प्रवृत्तिं विनिवेद्य, मतलब राम जी का वृत्तांत बताकर और अभिज्ञान दिखाकर वैदेही को समाश्वसित करने के बाद हनुमान ने वहां का तोरण नष्ट किया, मर्दयामास। उसके बाद हनुमान राम की परिचायक अंगूठी सीता को देकर सीता हरण के बाद राम सुग्रीव की मैत्री पर्यंत का संपूर्ण वृत्तांत उसे सुनाया और केवल सीता को ही जो पता हो ऐसे राम के अंग के चिन्ह के बारे में बताया एवं शीघ्र ही राम आने वाले हैं ऐसा कहकर सीता को आश्वस्त कर दिया। अभी ये सब इतना सारा इस दो वाक्य में नहीं लिखा है, लेकिन बाय कॉन्टेक्स्ट वी कैन नो दैट। आश्वस्त कर अशोक वटिका एवं उसके प्रवेश द्वार को ध्वस्त कर दिया, ऐसा यहाँ पर अर्थ लिखा है। इसमें समास क्या है, तर्हि अत्र नास्ति, समासः एव नास्ति, अभिज्ञानं विनिवेद्य समाश्वस्य इत्यत्र समासः नास्ति। So we'll stop here and I will just request Shreyas. Hello Shreyas, are you there? नमस्ते भगिनी।
I will stop sharing, and if you want to share something, you can share it. So as you all know, the course is coming towards the conclusion, and I'm sure all the participants have learned quite a lot from this course, which has been going on for a few months. And since the valedictory session will be on the coming Monday, and we have a lot of events planned on that day, we want to make sure that all of you get an opportunity to share your experience, what you have learned, and what you feel has been the highlight for you throughout the journey that has been going on. So today we decided that you can share your feedback here in this session. I request those of you who will be willing to speak to use the raise hand option so that I can promote you to a panelist, and you can switch on your video and audio and you can share your experience. The other request is I will also be sharing the feedback form link once again in the class. As I mentioned the previous class, it is necessary for you to fill the form in order to complete the certification process. So once again, I'll be sharing it here, and meanwhile you can you raise your hand and I'll be promoting you to panelist. Sarita ji, you can go ahead. Namaste. Namaste. Can you please switch on your video? Yeah. So it was a very beautifully structurally designed course. So thanks to all the Vyoma team, and I thoroughly enjoyed the course. So Leena Bhagini is really very patient to clarify all the doubts, and through this course we learned the Shastra along with the Vyakarana. So that was the highlight for me. I was uncomfortable with using Samsadhini. That's it. Otherwise, it was a very wonderful course. And I just want to thank and wish good wishes for Vyoma to continue with their Samskara, Samskriti, and so all the best. Thank you so much. Dhanyawadaha, Sarita ji. I have shared the feedback form link in the webinar chat. I request those of you who haven't filled the form to kindly do so. Amita ji, you can unmute and switch on your video. Namaste. I would like to thank Dr. Leena Doshi and Vyoma team. I knew nothing about Pratyaya and Prakriti and Samasas, and Dr. Leena Doshi has taught very nicely, and I sincerely thank her, and thank the Vyoma team too. I hope that we'll be learning more about Ramayana. Dhanyawadaha. Dhanyawadaha. Vijay Raghavan ji, you can go ahead. Yeah. Are you able to hear me? Yes, yes. Just give me a minute. Can I have some technical problem? Just give me, I can speak. Sure. You can go next. Meanwhile,
I request Jairam ji to go ahead. नमस्ते, मम शब्दः श्रूयते इति मन्ये। Yes. अस्तु, श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्माकं पूज्य आचार्यायै लीना दोषी महोदयायै अपि च सहछात्रेभ्यश्च मम नमस्कारः। संक्षेपरामायणम् इति अस्यां कक्षायां व्याकरणसहित व्याख्यानविषयाः आचार्यया भगिन्या पाठिताः। एकैकवाक्यस्य अन्वयः, अन्वयार्थः, तात्पर्यम् एवं सर्वं तया अस्यां कक्षायां विशदीकृतम्। अस्मिन् मङ्गलावसरे तस्यै मम कृतज्ञतां प्रकटीकर्तुम् इच्छामि। आचार्यया अत्यन्तं क्षमासहितम् अस्माकं सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं दत्तम्। एकैकप्रश्नस्य विस्तृतरूपेण विश्लेषणानि तया दत्तानि। धन्यवादः। इदं महाकार्यमस्ति इति अहं मन्ये, यतः अत्र लण्डन् नगरे अहं लघु संस्कृतपाठनं कुर्वन् अस्मि। अतः अहं सम्यक् न जानामि छात्राणां प्रश्नानां समाधानं सरलरीत्या दातुं तु किञ्चित् क्लेशः अध्यापकैः अनुभूयते इति। नमस्कारः। यदि भवत्या अन्यकक्षाः भविष्यत्काले पाठयिष्यन्ते तर्हि तत्र अहं निश्चयम् आगमिष्यामि महोदय। कोटि धन्यवादः आचार्ये। अपि च व्योम संस्थापनार्थमपि मम कृतज्ञाः वक्तुम् इच्छामि। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः। धन्यवादः Jairam ji. Vijay Raghavan ji, if you are ready, you can go ahead. Yeah. So, Namo Namah Sarvebhya. My name is Vijay and I'm a software development manager at Amazon, currently based in Austin, Texas. For the last 20 years, my professional life in the fast-paced tech world, including roles at Flipkart and Ola, has been defined by logic and code. Yet, a deeper calling to connect to our cultural roots persisted. In the beginning of this year, I made a resolution to truly understand the Sankshepa Ramayana. I began by listening to the recitations, but the profound meaning remained beyond my grasp. My only qualifications were my ability to read the Devanagari script and my sincere desire to learn. It was when I discovered this course from Vyoma Sanskrit Pathshala. The first class was a humbling experience. I was introduced to many new grammatical concepts. Sandhi, Tinanta, Subanta, Samasa, Lakara, all were entirely new to me. For a moment, it felt like an insurmountable challenge. However, this initial apprehension quickly transformed into inspired determination thanks to the incredible ecosystem of learning that Vyoma has built. The cornerstone for this transformation has been our revered guru, Dr. Leena Doshi Mahodaya. Her guidance was a light that illuminated every step of this journey. Patience and encouragement, Leena Mahodaya possessed an extraordinary ability to make every student feel seen and capable. She answered each and every question, even repeated ones, with meticulous detail and unwavering patience, giving me the confidence to persevere and continue. In scholarly expertise, Leena Mahodaya's deep command over the subject was very clear in her detailed and insightful explanations. She made the most complex grammatical rules feel accessible and interesting. Leena Mahodaya also understood the unique needs of her students. A perfect example of how our exam, she worked with volunteers to create a comprehensive spreadsheet detailing grammatical analysis of each and every word. And we studied that, and it was immensely helpful. Mahodaya also organized 2 special guest lectures by Dr. Soumya Krishnapur, which covered the essence of vast topics like Krit, Pratyaya, Tadit, Pratyaya in 2 short classes. This course itself is a masterclass in leveraging technology for learning Sanskrit,
The grammatical deep dive was anchored in the Samsadhani tool, graciously made available by Dr. Amba Kulkarni. Its ability to break down the shlokas into visual tree-like Karaka analysis was very interesting for my understanding. We were also introduced to digital koshas like Ashtadhyayi that allowed us to dive deeper into layers of meaning for each and every word. The assignment was also fun and thoroughly designed to test our comprehension and creativity. Right. The entire experience was seamlessly powered by the Vyoma platform. I was very impressed, whether it be the desktop platform, the mobile app, it was consistently performant and intuitive. There were notifications, easy access to class recordings, and a smooth online examination process. And a dedicated WhatsApp group created a holistic environment. The ability to catch up on missed classes with high quality recordings was a true boon. Throughout the course, I also realized that Vyoma was the best platform with comprehensive, searchable, and expert resources for learning Sanskrit. Finally, after 35 classes and countless hours of self-study, blessed by the guidance of Leena Mohide, I feel a profound shift. The journey for Sankshep Ramayana was no longer an academic exercise, but it was a virtual pilgrimage. From my desk in Austin, I traveled to Ayodhya, felt the serenity of Chitrakuta, and met great sages like Narada Muni and Sage Vasishta. I'll thank you again for bringing this great platform for the benefit of this whole world. Thank you very much, and I'll continue to do classes on Vyoma. Thank you. Thank you so much, Vijay Raghavanji, for explaining what you experienced in the course in detail. Bhavani ji, you can go next. Hari Om, Mama Nama Bhavani. I'll talk in English. I'm sorry. I started learning Sanskrit during the time of COVID. COVID. And from that, I got interest in learning Sanskrit shlokas. And from there, I happened to know about Vyoma. I joined in Vyoma. And I attended 2-3 courses in that. I finished the Raghuvamsha, which was done by Dr. Mrs. Soumya Bagini. Now she is taking Sanskrit grammar class for us, which is the paper of Vichakshana. And according this course, I learned to chant Samkshepa Ramayana with another Guru Namni Vanishri Raghupati. And I got, when I got that Vyoma is conducting a course, I joined in this course. And Guruji Leena Bhaginya classes were such a great thing. That we should not miss each class. So, and before that, I don't know anything about Vyutpatti, Pratyaya, Unadi Pratyaya, such things. Everything which was explained by Mrs. Veena. I got very interested in that Sankshepa Ramayana, of course. And I want to learn more courses which will be conducted by Vyoma in future. That is my wish, and I hope I will do it. And my thanks to every one of the gurus in Vyoma. Salutations to everyone. Thank you. Thank you, Bhavani ji, for your kind words. Now I request Venkateshwaran ji to go ahead. Yes, thank you. And I'm extremely benefited by this course. Reading grammar purely as a
this thing will not be interesting, but applied grammar through Sankshepa Ramayana was really great, and you could correlate with the Ramayana story and the grammar contents. That way, the course was made very interesting by Dr. Leena Joshi. She very promptly uploaded the course contents, and after some 50 shlokas, she loaded all the samasa contents, and she made the even the assignment were very interesting, giving choices, and I found overall this very interesting way to learn grammar, even though I cannot vouch. I have learned completely all these grammar rules. Example, in Ashtadhyayi, the various words, vibhaktis of, and then the conjugation. But then this has prompted me to probe deep into and pay attention and get memorized. Memorization at this age is very a tough task, but repeatedly you go through, you can get some confidence. So if overall I feel Vyoma has done an extreme effort in this imparting this knowledge to interested people, and I hope in future also this tendency will be continued. Thank you very much. Thank you, Vyoma. Thank you, Venkateshwaranji. Yes. Meanwhile, I'll just kindly remind everyone to fill the feedback form, those who have not done it. Anuradha ji, you can go ahead with your feedback. नमस्कारः मम नाम अनुराधः पुण्यनगर्यां वसामि वयेन 70 वयस्या राम मम इष्टदेवता रामायणस्य अध्ययनं मम बहुकालेन अध्ययनस्य इच्छा मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं रामायण का अध्ययन करूं। उसके लिए मैंने संस्कृत सीखना शुरू किया। मुझे व्योमा के बारे में बहुत देर बाद में पता चला। कोविड के बाद से कहीं से संस्कृत को ज्वाइन किया था, तो थोड़ा बहुत आने लगा था, पर इस उम्र में मैं कंप्यूटर सेवी नहीं रहने से मुझे ये सारे साधन पता नहीं थे कि मैं कहाँ से इन सब चीजों के बारे में जानकारी लूं। जो किताबों से मिलती है वो इतनी डिटेल में नहीं रहती है, और ये करने की इच्छा रहने के बावजूद भी कर नहीं पा रही थी। जो मुझे चाहिए था वो जैसे थाली में परोस के दिया गया हो, इस तरह से मुझे आसानी से मिल गया। तो अभी आप सोच सकते हो कि मैं हृदय से कितनी आभारी हूँ व्योमा एज अ टीम सभी की, क्योंकि पूरी संस्था ने ही इस तरह से ये काम कर रही है कि जो भी सनातनी है उनके मन का कोना कहीं ना कहीं उससे स्पर्श होता है। और तो शब्दों में जिसका बयान नहीं हो सकता है, जो चाहिए वो मिल रहा है। और व्योमा के जो भी कोर्स आते हैं उसमें मैं ज्वाइन होती जा रही हूँ, परीक्षाएं देती जा रही हूँ, जो कि मेरा स्वभाव नहीं है। फिर भी अब पता नहीं क्यों बस इसमें ग्रोथ दिख रही है मुझे अपने आप को। मन भी समाधानी हो रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है। जिसको मैं बरसों से ढूंढ रही थी, अब वो मेरी आकांक्षाएं तृप्त होती लग रही है। समय भी है, सेहत भी है, और सामने सब तैयार मिल रहा है। अब और क्या बताऊं मैं आपसे, किसको धन्यवाद दूं। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, मैं हृदय से ऋणी रहूंगी और ये ऋण चुक नहीं सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराधा जी।
Apparauji, you can go ahead next. You are muted. You're on mute. Can you unmute yourself? You're on mute. You are not audible, Mahoday. Please unmute yourself. I think you will receive a notification, Mahodaya. You can click on it to unmute. Just try to unmute. I will go to the next person and you can go ahead next, sir. Laliji, you can unmute and share your feedback. Ram. My name is Lali. It's been an incredible journey with Vyoma Samskrita Padashala and Sankshep Ramayana course. I'm joining this course from Canada. 1 second, is my video there or? Yes. Okay, thank you. I will continue. I'm truly grateful for the transformative experience I have had with Vyoma Samskrita Padashala. As someone who always felt a deep connection with Sanskritam, but struggled to find the right resources and guidance, Vyoma provided the perfect platform. The structured courses, the dedicated teacher like Dr. Leena Doshi, and engaging methodology, and insightful interactive QA session of the participants and the teacher also enriched my knowledge a lot. The application of digital tools made learning not only accessible, but also enriching with assessments and project for evaluation and understanding. What sets this course apart is its commitment to preserving the beauty and depth of Sanskritam through the deep dive into the Sanskrit grammar, while making it relevant and enjoyable to learners from all backgrounds. Whether you are a beginner or a seasoned student, the platform offers something valuable at every stage. Thanks to Vyoma, Dr. Leena Doshi, and all the participants, I can now read better, understand better Sanskritam, and with more confidence. I realize there is miles to go. I wholeheartedly recommend Vyoma Samskrita Padashala to anyone wishing to embark on a meaningful journey into the world of Sanskritam. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha, Laliji. Apparauji, can you unmute yourself? I think he has left the panelist mode. Leena Bhagini, I think I don't see any more raised hands. Is there anyone else who would like to share the feedback today? I don't think there is anyone. So Yes, Bhagini. it's okay. Thank you, Shreyas. I will just continue my session. Thank you very much. Thank you, Ram. Okay. So we'll go to the next shloka. Panchasenagragan hatva saptamantrisutanapi शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् इत्यत्र तत्र अन्वयं पश्यामः. समुपागमत् इति क्रियापदमस्ति. कः समुपागमत्? सः हनुमान् समुपागमत्. किं समुपागमत्? ग्रहणं समुपागमत्. किं कृत्वा? हत्वा. कान् हत्वा? पञ्चसेनाग्रगान् तथा च सप्तमन्त्रिसुतान् च हत्वा. तथा च किं कृत्वा? निष्पिष्य. किं निष्पिष्य? अक्षं निष्पिष्य. कीदृशम् अक्षं? शूरम् अपि अक्षं निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्. कः इति चेत् हनुमान्. सः हनुमान् पञ्चसेनाग्रगान्
सप्तमन्त्रिसुतान् च हत्वा शूरम् अक्षम् अपि निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् इति तत्र अन्वयः अस्ति। उसके बाद 5 सेनापतियों को एवं 7 मंत्री पुत्रों को मारकर रावण के वीर पुत्र अक्षय कुमार को चूर करके मेघनाद द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र में वो आबद्ध हो गए, मतलब पर्पसली ही डिड दैट। तो यहाँ पर अर्थ देखा है हमने, समास देखते हैं सेनाग्रगान। अत्र सेनायाः अग्रगाः तान्, षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति। सेनाग्रगान् इत्यत्र द्वितीया अस्ति इति कृत्वा तत्र तान् इति योजितं। सेनायाः अग्रगाः तान् सेनाग्रगान्। मन्त्रिसुतान्, मन्त्रिणः सुताः मन्त्रिसुताः तान् मन्त्रिसुतान्। मन्त्रिणः, मन्त्रिन् इति शब्दस्य षष्ठी, मन्त्रिणः सुताः अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते। अस्तु, तर्हि we completed till 75 shlokas. There are still 25 shlokas left to cover, but I don't think we can complete it before the exam. You can proceed with revisions with the recorded lectures. I tried my level best to complete it. If at all time permits, I will see if I can take the class further. Astu. Yes, Bhavani ji, do you have any question? Yes, Bhavani ji, boliye. Monday I asked about Atmajah, Atmaja iti. अत्र 71st श्लोक में आता है कि जनकात्मजाम इति आता है 71st श्लोक में। अत्र आत्मनः ध्यायते इति आत्मजः आत्मजा और आत्मजः दोनों भी हो सकता है। देखिए, जो शब्द व्युत्पन्न होगा समासिक शब्द वो है आत्मज होगा, और उसको सुप प्रत्यय वगैरह स्त्री प्रत्यय लगा के आत्मजा होगा। और अगर आत्मज बना है तो उसके आगे सुप प्रत्यय वगैरह लगाकर सुबंत पद आत्मज बन जाता है। हम देव बनाते हैं, देव और उसको सु ऐसा प्रत्यय लगाने के बाद देवः शब्द बनता है। वैसे ही आत्मज प्रातिपदिक को अगर प्रथमा का सु प्रत्यय लगाएंगे तो आत्मजः बनेगा। लेकिन अगर स्त्रीलिंग में बना है तो स्त्री प्रत्यय आएगा जिससे योजा जाएगा, वो आत्मजा होगा और उसके बाद सु प्रत्यय लगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। Okay. Anyone else have any question? Please go ahead. Yes, Sarita ji. I will unmute. 1 minute. Yes, Madhatu. Namaste, Mahodaya. I just wanted to ask about the pattern of oral examination. Will it be declared later? Yeah, it will be declared later because it will be, you will have almost 15 days gap after your MCQ exam. So typical pattern is reciting, I already told you at least 5 shlokas you should recite. From those 5 shlokas you will be asked to recite one. One shloka will be for Anvaya. Like we are doing the Anvaya, asking questions and getting to Karta, Karma and all that. Like that you have to do the Anvaya. And the shloka will be probably told by the teachers. Then you will be asked about Krut Pratyaya and Tadhit Pratyaya. A word will be asked whether it is a Krut Pratyayanta Shabda or Tadhita Pratyayanta Shabda, and what will be the Pratyaya, that will be asked. And then Samasa. And also grammar, like Senagragan iti Shabda asti te chatra
प्रातिपदिकं किं, का विभक्ति इति सर्वं वक्तव्यम्। The shloka for the Anvaya will be displayed. Yeah, mostly. Okay. Thank you. So you just now focus on MCQ test, then you can think about the order. Thank you so much. Thank you. Yes, Jairam ji, बोलिए. नमस्ते आचार्य, मम प्रश्नः अस्ति परीक्षा MCQ परीक्षा विषये तत्र प्रायः व्याख्यानविषयाः एव भवेयुः अथवा कथायाः विश्लेषणमपि अस्माभिः No, it is MCQ. So multiple choice question. So it can be katha related or grammar related or samas related, anything. Oh, तर्हि कथायाः एक्साम्पल् रामः किम् एतत् अवदत् इत्यादि प्रश्नाः अपि भवितुं शक्यन्ते। अस्मिन् प्रसङ्गे रामः किम् अवदत् ABCD इत्यादि। There is mostly no. So MCQs are there, no? So logically and with the reading of these Sangshepa Ramayana, you can answer. You should have the grammatical base also. So I think it will be. But grammatical तो थोड़ा और भी easy है, लेकिन इस कथा में इस प्रसंग में क्या बोला, that can be a little bit tricky. That's why इसलिए मैं. No, you just keep reading the shlokas, it will be easy. अस्तु, धन्यवादः. प्रिया श्रीनिवासन, बोलिए. नमस्ते भगिनी. धन्यवादः. बहु सम्यक् रीत्या भवती पाठयति. बहु धन्योऽस्मि. सरिता भगिनी पृच्छति from the 5 shlokas that you had said that from 5 shlokas we have to recite, and from that 5 we will be asking for 1 shloka for Anvaya. That is what I understood. I just wanted to clarify if my understanding is correct. Let me explain. So I have asked to by heart 5 shlokas to you. Any 5 shlokas, whichever you like. So to recite one of that shloka will be asked. Okay. Oh, okay. To recite one of the shlokas, but for Anvaya it can be from anything, not just that 5. No, not from those 5 shlokas. Anvaya can be from 1 to 100 anything. Okay. Thank you. Yes, Bhavani ji, आपने पूछा है, right? The same question previous Daini was asking, that was my doubt also. Anything, any 5, will it be continuous 70 to 75 or like that, or any 5 we can choose? देखिए, अगर आप देखिए, as a examiner, how can I decide which you have recited? So you need to tell, no, कि I have recited 70 to 75. That's easier for you to tell and ask to the person, right? The person who is taking that. Yeah. And regarding that Krit Pratyaya and another thing you were telling to Harita ji, Krit Pratyaya in 100 shlokas or in the 5 shlokas which we select? No. See, that selection is only for recitation. Astu. Krut Pratyaya and Tadvit Pratyaya, we have the whole portion of 100 shlokas. Even for samasas, Anvaya, for everything else, the portion is 1 to 100. Only for recitation. If you are willing to recite 1 to 100 shlokas, I'm happy. But it's not. This is not a recitation course, so you can choose any 5 only for recitation. Also, and another thing I wanted to tell you, and as of now, I am at Muscat, Oman country. Here, through WhatsApp only we can call. When this Mokika is going to happen, maybe at times, this VPN one app is there for this WhatsApp calling. Let's not take a kshanam, Bhagini. So whatever problems you have, just
send an Ah. email to Vyoma. We will see what Astu. best we can do. Okay. Astu, Bhain. Astu. Dhanyawad. Dhanyawad. That was, at times it works, at times it is not working. So that Yeah. was the problem for me, and I'll That inform will not be a Vyoma. call. Mostly Ah. it will be a Zoom meeting, and in Zoom meeting only you have to choose the slots. And if then if that is means it is okay. It's for me. Okay. It's very good for me. Dhanyawad. Thank you. Oh, thank you. So now, as I said, now just focus on your MCQs. Don't think about orals. Okay. You have Astu, 15 Bhain. days. left. Dhanyawad. Yes, Sarita ji. Do you have any question? Priya ji, do you have any question? If Sorry, not, ma'am, please. I didn't. Okay. My question was answered. Thank you. Okay. Priya ji. Yes, Vimla ji, बोलिए. Okay. Yes, I have a question. I have the Srimad Bhagavad Gita. Is there also like you did the deep dive, grammatical deep dive grammar? Yes, for Bhagavad Gita. Not yet, but we are thinking of. Okay. And I want to say now because that you did a great job and I appreciated the way you do it and I like to have more of that. That's why. Thank you. Thank you very much. Please send your feedback, otherwise you will not get your certificates. Certificates are important or not important, that's not the question here. So your feedbacks will help us improve, and your feedbacks will help us think about future courses also. So please let us know about your feedbacks. Sushila ji. Namaste, Bhagini. Since Namaste. I could not connect earlier, I could not say anything much earlier. I wanted to thank you from the bottom of my heart for making us go through this course, and you have done an excellent job. Thank And you. I should thank the Vyoma team also for Yes. helping us in all technical these things also. And the course itself is very well designed, and I would say that thanks to Vyoma, I am at least moving a little forward in my journey in Sanskrit. And thank you for clearing our doubts at all times. Thank you very much. Thank you. Anuradha ji, do you have a question? हाँ, लिंक भेजी. कौन सी लिंक, मैडम? Unmute yourself and then talk, Anuradha ji. हाँ, I unmuted myself. बोलिए. हाँ, वो जो लिंक फॉर्म भरने के लिए भेजी है, हाँ. वो व्हाट्सएप में भेजेंगे तो फॉर्म भरने के लिए मुझे व्हाट्सएप में भी भेजी है, फिर से आज हाँ, मैं हाँ. अगेन हाँ, वो वहां पे है तो फिर भरने के लिए आसान होगा. इसके लिए यही बोलना था बस. जी है वहां पर, और अगर आज फिर से मैं वो रिपोस्ट कर. हाँ, ठीक है. धन्यवाद. धन्यवाद. अस्तु. I think the questions are done. We will recite the prarthana. सर्वे सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. धन्यवाद, भगिनी. धन्यवाद.